A very good evening and welcome to Straight Talk. Ladies and gentlemen, even as the city of Toronto tries to bounce back to life, there is very little that we can offer. No amount of words can cure the pain, the agony of the victims and the aggrieved families. The question is, did those 10 people, would they have died this kind of death? And the other injured, 16 injured, did they deserve to die like that? And what about the people who were actually witness to this horrific tragedy? The question is not about who did this. The question is about the aftermath, that how do we begin again? It's not about the politics that's being played. It's not about the who is to be blamed, liberals or conservatives. The point is how to move ahead, how to move forward. We are joined by a very senior journalist, Manish Biala, with us. He'll be sharing his views on the entire development. He has been covering these very North American affairs for quite some time, an expert authority. But before that, the incident was definitely horrific. But as they say that the human intent is the strongest, human beings has the strongest intent to survive, and that is what makes this humanity so lively and so worthy. So Manish, it's a real pleasure to have you here. Though the incident is not that fortunate, but still, how do you look at it? I mean, had it been some other, say, some refugee or somebody else, the thing would have been, the debate would have escalated to different kind of proportions. कोई कहता अगर मुस्लिम होता या सिख होता या हिंदू होता तो शायद ब्लेम गेम एक अलग सी जो राजनीति इस पे चल पड़ती, और कई कुछ ना कुछ जो अपोजिशन पार्टीज हैं या इन पावर है वो भी कोशिश कर रही हैं कि किसी ना किसी को जो है कटघरे में खड़ा किया जाए, और एक ब्लेम गेम जो है किसी को जो है कटघरे में खड़ा करके जो है उसके ऊपर राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकी जाए. हाउ डू लुक एट द एंटायर डेवलपमेंट? विनय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. एंड आपने कहा था कि आफ्टर मैथ, मैं सबसे पहले यही बात करूंगा कि आफ्टर मैथ जो है सबसे बड़ा कनाडा ने एक मैसेज दिया वर्ल्ड को कि हम इस टेररिज्म के आगे झुकेंगे नहीं. कनाडा एक था, एक रहेगा. पॉलिटिक्स होगी, पॉलिटिक्स का माहौल है क्योंकि इलेक्शन नेक्स्ट ईयर में ड्यूज हैं, और उसके लिए एक तरह से माहौल बनाया जा रहा था. लगता था कि प्राइम मिनिस्टर को टारगेट किया जाएगा, टारगेट की कोशिश भी की गई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो मैसेज दिया है कि ऐसी जो घटनाएं हैं वो कनाडा को शामिल नहीं कर सकती, और जो मानसिक रोग से पीड़ित लोग हैं जिनको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि ऐसी घटनाएं, अगर मैं बार्सिलोना की बात करूं, अगर मैं न्यूयॉर्क की बात करूं, अगर मैं लंदन की बात करता हूं, अगर मैं फ्रांस की बात करता हूं, तो ये कनाडा के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो अब हो रहा है. लेकिन कनाडा ने जिस तरीके से इसको टैकल किया है, बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, और साथ में ही उन्होंने जैसे मैसेज दे दिया पूरे वर्ल्ड को कि हम इस इशू के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे, ये नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई थ्रेट नहीं है, और हम पीसफुली इसको हैंडल करेंगे. और उन्होंने अपनी सद्भावनाएं जो जिस तरीके से दिखाई हैं कि जो 10 लोग इस घटना में मारे गए हैं, पूरा कनाडा उनके साथ है, और हम इस दुख को कभी भुला नहीं सकते, और उससे हम सीख लेंगे जो सबसे बेस्ट पार्ट था. Very rightly put. Maybe India has a lot to learn from this very incident, क्योंकि had this similar kind of incident, unfortunate incident, I mean, which keep happening from time to time on Indian soil also, अगर कुछ ऐसा वहाँ पे हुआ होता तो definitely blame game जो है, राजनीतिक जो है, जो कि हमेशा हम अमूमन देखते हैं, वो एक नए proportions को जो है छू जाती. Probably the Indian politician should also learn from some that when it comes to national security, the nations like Canada, be it they are in any political party that is in power, or irrespective of the fact that they are in opposition, they are united on the common issue of national security. So taking the debate forward, जैसे कि लगता है कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये एक बहुत ही इसे कहेंगे कि एक आपको मनोरोगी या किसी को जो है, इट्स मोर लाइक somebody who is mentally very sick. राइट. एंड ऐसे केसेस जो हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, चाहे एशियन कंट्रीज में, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में ऐसे इंसिडेंट्स, इवन यूरोप में काफ़ी इंसिडेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं.
why is it so? What are the reasons? क्योंकि अभी तक जो जितनी भी इसके ऊपर स्टडी हुई है और जितनी भी रिपोर्ट सामने आई है उससे ये एक चीज पता लगता है कि जो एलेक्स था, जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है, उसने क्लियरली वो मानसिक रोग से पीड़ित था। और जब पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ी है और उसने कहा है कि मेरे पास वेपन है, मुझे शूट करो, मेरे हेड में गोली मारो, और वो मरने के लिए आया था। और मरने के लिए जब कोई ऐसे लोग निकलते हैं तो पूरी दुनिया का जितना भी सिक्योरिटी इंतजाम है वो कहते हैं कि जब ऐसे लोग अपने एक दिमाग में एक ऐसी चीज लेके चलते हैं कि किसी का नुकसान करना है तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस पॉइंट ने दोबारा से एक बार एक डिबेट शुरू की है। क्या आज सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग कहीं ना कहीं कोई सिग्नल छोड़ते हैं कि वो ऐसी घटना को करने जा रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए और कैसे इस पॉइंट को और ज्यादा इसके ऊपर डिबेट की जाए कि कौन इसको अलर्ट करे। वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं जब बार बार आप देखते हैं, साइक्लिक रेपिटेशन जब आप देखते हैं कि कोई स्कूल का बच्चा या कोई कॉलेज का बच्चा, इवन समबडी हु इज डिस्ट्रेस्ड, लाइक इन दिस केस द गाय वाज कंप्लीटली ही वाज रिजेक्टेड बाय हिज फ्रेंड्स to some extent. That is what we make out from his Facebook posts and all, and he couldn't take on the rejection, right? And you made a very important point that we have to follow when we talk about the social media. We got to follow it very vigorously, very aggressively, so that these kind of incident doesn't become a repetition in itself, right? Because this guy, he did leave some message that okay, he can do something like this, he can harm, because people who are in this kind of situation, they are ready to harm themselves, they are ready to harm someone else also, right? But at the same time, let's be honest that identifying such kind of people is not at all so easy. Even it's a challenge for the intelligence agencies, it's equally challenge for the friends also, because you're one fine day you are my classmate, next fine day you turn out to be a murderer, I mean, who is responsible for such a big carnage, right? So कहीं ना कहीं पे हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को जो है, like they have to bring in a very healthy fabric to the entire DNA of how we live, because we live in a virtual reality at the moment. We all are glued to our Facebooks, our WhatsApp all the time, but in reality जो है हमारे Facebook पे friends चाहे हजारों में हो, in reality we are feeling very isolated. No, I think सबसे जो मेजर पॉइंट इस पे सामने आता है कि हम Facebook और सोशल मीडिया पे अपने जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर लगे कि कोई गलत है तो इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करना चाहिए। हर एक सोशल मीडिया के ऊपर इस समय रिपोर्टिंग की ऑप्शन है, सो आपको हाईलाइट करना है अथॉरिटी को कि ये ऐसे हो रहा है। अगर फ्लोरिडा स्कूल की हम शूटिंग की बात करें तो वहीं पे भी इस सिग्नल को लोगों ने पहले हाईलाइट किया था, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसको इग्नोर किया है। और यहाँ पे भी अगर बात करें, अगर सोशल मीडिया के फुटप्रिंट को चेक किया जाए तो ये जो एलेक्स था, इसकी अगर बैकग्राउंड चेक की जाए तो ये ऐसी पोस्ट को पढ़ रहा था, लेकिन इसको वॉच नहीं किया गया, जिसके कारण ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है। और आई थिंक जैसे फेसबुक ने इसके ऊपर कदम उठाया है, इमीडिएटली उसकी आईडी को ब्लॉक कर दिया और उसके बाद में सारा मटेरियल जो है सिक्योरिटी को दे दिया है कि आप चेक करें कौन कौन लोग इसके साथ एक्टिव थे। तो ये अपने आप से प्लस पॉइंट है। और आने वाले दिनों में आई थिंक जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर एक नया चेक रखेंगी ताकि जो ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। और साथ में आपकी बात को आगे बढ़ाता हुआ एक और जो बात देखने में आई, एक जो काइंड ऑफ ट्रेंड आई ऑब्जर्व्ड एंड मैनी लाइक मीडिया आल्सो ऑब्जर्व्ड on the social media also, कि जैसे ही ये वाकया हुआ उसके बाद immediately it actually sent a kind of very scary feeling to everyone, and especially to the people who came from other countries, say immigrants, refugees who had just come, and communities, I mean, who are like minorities in this very nation in Canada, right? So हम इस बात के ऊपर भी चर्चा करेंगे इसको आगे, बट ये बहुत ही अहम, क्योंकि ऐसा देखने में आया काफ़ी सारे लोग बेचारे वो किसी भी कम्युनिटी के साथ आइडेंटिफाई नहीं होना चाहते, राइट? तो पहला उनका सवाल ये था कि ये किस कम्युनिटी के किस से बिलोंग करता था ये शख्स जो है, उसके बारे में दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, सो दैट वी आर नॉट आइडेंटिफाइड विद दैट वेरी इंडिविजुअल, राइट? सो विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक and then we'll continue with the discussion. Thank you. Once again, welcome back and welcome to Straight Talk. So as we were discussing on the carnage that took place in Toronto on Monday, immediately after, as soon as this very horrific, horrendous incident took place, people they took on to the social media and started posting the live images of what they saw, as many were
witness, many were witness, and remember that Canada is a land of multi-ethnic culture. I mean, people, they come from diverse backgrounds, they come from South Asia, they come from Europe, and the best thing is that in the last few months, many people, many young people, they students, they come from even European countries also, as they can easily get study visa or work visa here, right? So many of them, they actually prefer this very country, as this is already known as a land of refugee, the country of immigrants. But the horrific and the most scary thing was that immediately after, as people took onto social media on Facebook, I mean, the first question they posed was that, okay, was he Muslim? Did he belong to some community? Because people, if somebody was a Muslim here, or if somebody was a Sikh here, anybody coming from minority community, say Hindu even, right, they were just scared that the person who made this horrific attack, he should not be the one who is coming from belonging to their community. Yep. It was like, अगर मैं हिंदू हूं तो कम से कम जिस बंदे ने आज अटैक किया है, he should not be Hindu at least, because otherwise people in my community and my circle, they will think that okay, the Hindu did this very attack, and it is so easy to polarize things. So there was a sentiment of feeling scare, there was an element of scare which I could witness, and even, I mean, as an individual, I was also keen to find, okay, which community is this guy coming from? Because had he been, say, supposedly coming from Muslim, people would have definitely, the first reaction of any individual would have been that he is coming from IS, right? But I would like to add it, क्योंकि जिस तरीके से कैनेडियंस ने इसको रिएक्ट किया है, जी, वो बिल्कुल अप्रिशिएट करने वाला है कि हेल्दी है। लेकिन पॉलिटिशियन का, जैसे आपका क्वेश्चन था कि किस तरीके से उन्होंने हिंदू ढूंढ रहे थे, वो मिनोरिटीज को ढूंढ रहे थे, वो क्वेश्चन था क्योंकि उसके ऊपर पॉलिटिक्स की जानी थी, और पॉलिटिक्स का बिल्कुल कैनेडियन ने जो है उसको स्कोप नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा कि जो भी लोग यहाँ पे मरे हैं इस समय, वो सारे लोग कैनेडियन थे। पहले बीइंग ए कैनेडियन, रिस्पेक्ट कीजिए उन लोगों की जिनके घर में इस समय मातम है, हम दुख है उनका, और इसको रोकना कैसे है और पूरी कैनेडियन कम्युनिटी को एक साथ कैसे होना है, इसके लिए हमें एक वचन दिखाना है। ये सबसे बड़ा पार्ट था। और जो लोग आप बात कर रहे हैं कि अगर मिनोरिटीज को कोई होता, तो जैसे पूरी आज जिस इरा में हम रह रहे हैं, जिस दुनिया के जिस माहौल में रह रहे हैं, यहाँ पे इमिग्रेंट्स को टारगेट करने की एक कोशिश हो रही है, और अगर बाय चांस, बाय बैड लक ऐसा कुछ होता, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिबेट होती है, एक टीवी स्टेशन के ऊपर इसको लेकर सवाल जवाब होते, और जो आई थिंक इमिग्रेंट्स के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन एक तरफ से राहत है, लेकिन बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, ये दुख की बात है कि ऐसी घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, और इसको रोकने के लिए कोई भी एजेंसी जो है वो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि ये दिमाग में आपकी घटना जो है उसको प्लान किया जाता है और उसको एग्जीक्यूट भी इमीडिएटली किया जाता है, जिसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है। Right. And Manish, our phone lines are open, and we have few callers online also. Hi, welcome to the show. Hello. I think they just lost it. Yeah, we dropped the line. Right. So, like, taking the debate forward, I mean, as you were saying that the community, many, especially people coming from minority communities, they were actually very scared of the fact that, okay, somebody should not be belonging, I mean, from their community actually, right? But in last few months, some countries, even in Canada also, we have seen that there are some initiatives, like Know Your Neighbor, right? Wherein when you see that, okay, you may have, say, 1,000 friends on the virtual, in the virtual world, say on Facebook, okay, but it is like that the silence is not in the woods, right? The silence is among the crowds. I mean, you may be smitten, you may be in the company of, say, 100 of people around you, okay, but still the crowds, all of a sudden, they have become very silent. No, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि एक आजकल हैशटैग चल रहा है कि not on my name. Okay. ठीक है, वो चीज को हमें जानना चाहिए कि आज ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, आज एक साथ चलने की जरूरत है, और कैनेडियंस ने वो करके दिखाया है। उन्होंने ब्लेम नहीं किया किसी को, ठीक है, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो हुई है, लेकिन उन्होंने एक साथ चल के इसको कंडेम किया है, सबसे बड़ी बात है, और दुनिया को मैसेज दिया है कि आतंकवाद को, जब भी ऐसी घटना को किसी को रोकना है, इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, हमें उन लोगों के साथ चलना चाहिए। और सबसे बड़ी जो क्वेश्चन अभी ये बनता है कि ये लोग किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के जितने भी अभी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, कि इस चीज़ को किस तरीके से रोका जाए। और ये हमारे जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, उनके लिए एक बड़ा मैसेज है कि आप डेवलप मुल्कों से कुछ और भी सीखिए,
कि पॉलिटिक्स सिर्फ जो है इन इशू पे नहीं करनी है, इनको लर्न करके पूरी अपनी जो कम्युनिटी है उसको एक साथ में कैसे जोड़ना है और एक साथ आगे कैसे चलना है, इससे कुछ लर्न करना चाहिए। जी, very right, Manish. And surprisingly, I mean, these people who have these kind of tendencies to harm somebody else or to harm himself, right? They have these suicidal kind of tendencies. And I was actually surprised, Manish, that there are people, I mean, that in every 10 seconds across the world, there is someone who is committing suicide, which is actually very scary. That why do people, they have lost their urge to live. I mean, they say that this life is a blessing of God, but suddenly when you see the rise in such kind of tendencies escalating to this amazing proportions, that you actually have no convincing reason to find out that, okay, normally people would just treat it ki aapko depression ho gaya. You go to a doctor or people that, okay, this guy is under depression, okay, and that's why he's in depression, so he actually tried to commit suicide, right? So when you see that in every 10 seconds, people, almost even as we talk, there must be, the study says that even as we talk in this 30-minute show, right, there must have been some hundreds of suicides across the world. No, but right. The main part is when somebody is committing a suicide, nobody is making a focus on that. Yeah. But problem is when somebody is before committing a suicide, he is going to kill somebody. That's trouble. So the thing is, I mean, when somebody is having such kind of tendencies, he's least bothered that whether he kills himself or whether he kills 10 people before killing himself, right? So the point I'm trying to come is that, okay, how do we make the social fabric of this society healthy actually? How do we make जो हमारा एक main जो हमारे धागे हैं रिश्तों के, उनको हम कैसे और ज़्यादा जो है उन्हें कारगर और मजबूत बना सकते हैं? That is the thing, क्योंकि अब joint families वाला system नहीं रहा. People, I mean, it's just 2 or 3 people living in a same home. When the husband is in, the wife is out, right? And I mean, because they all want to make some money and they say that we are the most busiest people on the planet. No, I would like to add here, I'm a New Yorker, so there is one message in New York. If you see something, say something. So now you have to play this responsibility. If you see somebody is in depression or somebody is doing something wrong, you have to be informed such as securities or agencies or their parents, okay, stop this and bring light on this person so we can save some innocent life. Right. So we have to play a good moral role in this. So what you imply that the social fabric, to enrich that very fabric, I mean, that the community engagement of the government, it has to be very rocking, it has to be solid rock. Like it's few countries, even Canadian government, they started with the campaign like Know Your Neighbor. I mean, हम लोग एक जगह पे रहते हैं और हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे पड़ोस में नेबर हमारा कौन है. ये सिर्फ कनाडा की बात नहीं है या आपके अमेरिका की बात नहीं है, इंडिया में भी. आई मीन, यू गो टू बिगर सिटीज, इवन इन स्मॉलर टाउन्स आल्सो, एंड दे टेक इन प्राइड कि हमें यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए, बट वी डोंट नो हु इज द गाय लिविंग नेक्स्ट टू देम. एंड वन फाइन डे, आई मीन, व्हेन दे आर सडनली स्ट्रक विद सम काइंड ऑफ इमरजेंसी, दैट इज द टाइम व्हेन दे गेट टू नो द नेबर, राइट? The feeling of cohesiveness, the feeling of oneness is missing somewhere, and this kind of feeling actually is very common to the Western world and to the Eastern world also. No, मैं यहाँ पे जरूर एक चीज ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि कहते हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है ये एक गांव बन चुका है, लेकिन बात हम ग्लोबल विलेज की करते हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि हमने अपनी लाइफ्स को जो है 4 दीवारों के बीच में बंद कर लिया है. इससे बाहर निकल के दुनिया को देखने की जरूरत है. जो लोग दुखी हैं उनको साथ लेके चलने की कोशिश करनी चाहिए. ये सबसे बड़ा आई थिंक पार्ट होगा. You actually made a very valid point, because when you actually made a very valid point, we have callers and take it, go. Hello. Yes. Hi, good evening, welcome to Straight Talk. Good evening, sir. Yes, can you please put your question? Yes, sir. My name is Sukhi Chahal. I'm calling from San Jose, California. Yeah, Sukhi ji, please tell. Anji, first of all, I would like to congratulate to both of you guys, at least for the kind of discussion you guys are having. And also, I would like to congratulate to the management of the Just Punjabi, actually. Because to me, today, I can see Just Punjabi 2.0, because I live in the Bay Area, actually, because
That's the kind of like terminology I can come up with. Wonderful. This is, I am looking at the Just Punjabi 2.0 because this was very important actually, because right now most of the programming was in Punjabi, right? And so in every household actually, so we have a case, they don't understand Punjabi and they don't understand Hindi sometimes, right? Very well. So I think this way actually, so we can engage them. We can involve them. Yeah, definitely. And I am very, very impressed actually with the kind of discussion you guys are having. Thank you so and much. This is very, very important because we are leaving 50% of our own community out of the discussion, right? I understand. Right. And also the discussion which you guys are having actually, because I late joined actually, so I'm sorry actually if I'm going off track. No. So you guys were talking about the terrorism, like the attack in Canada, right? Yeah, true. Yeah, that is slightly not exactly the terrorism attack. It was a suicidal attack, basically. That killed some 10 people. So, Sukhiji, we do promise you that we'll be coming to you and we'll be interacting to you regularly from Monday to Friday every evening at prime time 8 p.m. and hope you'll keep watching us, and we need your wishes. I will. I would like to add in one thing and that one actually, because I'm not fully aware of the whole incident actually. So one thing, when I saw that news actually, I really like to congratulate that officer actually, so who responded to that guy, because on the social media actually I saw the clip actually. So that I admire the courage of that person, because he was able to arrest him alive actually. So then when the person is arrested live actually, because that's one of the biggest assets all the law enforcement authority has, because then they will be able to go to the root cause. What is the problem? Is it only the manic depression or somebody behind that? Because if you don't know the root cause, we pretty much lost a lot. Very valid point you are making, because you have to find out and go beyond the normal scenario, and you have to find out that what is the root problem of this. Very well said, Sukhiji. Thank you so much. And also on top of that, because that person, that officer put 100%, like he put his own life in because I will see actually, because one of the biggest risks he has taken, that guy was responding with a gun actually. So this guy has a very good choice in America actually. So most of the people, like officer, they don't take a risk actually, because immediately they shoot, right? And he went way beyond his duty actually. I have to congratulate him. Thank you. Thank you. Definitely. Thank you so much. Thank you so much. So he actually, Sukhiji, made a very important and valid point actually. This cop went, beyond the call of his duty. And the Canadian police, it was already under fire, because they, just few months back, they actually killed a special child who was carrying some knife in his hands, and he didn't know, he being, a special one, didn't know that what can be the repercussions. And there this cop goes and shoots this guy, right? And they was already under so much of fire that how can they actually kill someone, shoot someone who is mentally disabled. And here this cop, he goes beyond the call of his duty, and he stands a good chance that he could have immediately killed him, a murderer of 10 people. No, right. I think he's also put a barrier on the debate, because if unfortunately he killed this culprit on the spot, there will be maybe the ISIS come in the picture and they said that was their guy. So wonderful. Because he is arrested alive, they can check what the reason behind was and how we can tackle these things. And that will be, I think the officer should be in position, he should be awarded with a medal, because in future अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता भी है तो पुलिस को उन लोगों को जिंदा पकड़ के एक तो उनको पूरी लाइफ जो है प्रिजन में देनी चाहिए, और दूसरों लोगों को भी सिग्नल मिल जाए कि ये सिर्फ ये नहीं कि आप लोगों को मार देंगे ऑन स्ट्रीट और आपको 2 मिनट में गोली मार के को खत्म कर देगा, आपको बिहाइंड बार आपकी पूरी जिंदगी जो है वो सड़ना पड़ेगा, और आपको पता लग जाएगा कि कैसे स्ट्रीट्स पे जाके आप इस तरीके से हमला करते हो. Right. So well put. Like your license to that grants you to kill someone doesn't mean that you have to kill someone, right? So this officer, in a way, he has actually raised the bar very high for the armed forces, and not just in the armed forces in the North America only, but across the world. He has sent a message, because this news, it has traveled everywhere across the globe, that okay, there is this cop, who actually made a statement, right? And it is a big statement, and something the armed forces especially, who don't, most of the time these officers, they actually never miss an opportunity to hit or shoot someone, right? So they need to learn, and this guy, this cop, who definitely deserves a loud appreciation, and maybe people in the government, they will also acknowledge him for what he did. But he sends a message and raises the bar very high.
डेफिनेटली एंड आई थिंक सबसे बड़ा पार्ट जो ये हुआ है इसमें कि अब पॉलिटिशियन जो है वो अपना रोल अदा करेंगे, जो कैनेडियंस हैं वो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपना रोल अदा कर रहे हैं, और जिनको बिल्कुल हम हमारी जो भी टीम है बिल्कुल वो जो लोग इस पूरी घटना में अपनी लाइफ को खो चुके हैं हम उनके साथ अपनी सद्भावना जो देते हैं, और हम चाहते हैं कि जो लोग अभी 15 लोग जो हॉस्पिटल में जख्मी हैं उनकी जल्दी से उनकी रिकवरी हो और अपने घरों में वापस जाएं। लेकिन ये इंसिडेंट को रोकने के लिए सभी को एक साथ चलना पड़ेगा, एक मशाल के रूप में इसको लाइट ला के हमने बताना पड़ेगा कि इस घटनाओं को रोकने के लिए हमें खुद कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये लोग कहीं बाहर से नहीं आ रहे, ये बाहर से टेररिस्ट नहीं है, कोई क्रॉस से बॉर्डर नहीं आ रहा, ये घरों में जो लोग पैदा हो रहे हैं उनको रोकने के लिए हमें खुद कदम उठाने पड़ेंगे। Yeah, there is actually a very loud message there that we have to understand. I mean that who are these people and why are they doing so? And somewhere down the line, I mean, no amount, or like I said in the beginning of the debate, that okay, no amount of words can actually heal the wounds and agony, the grief these guys are suffering, the victims, their friends, their relatives, and even people who were actually badly injured, and even people, I mean, who were witness to the entire massacre, the entire tragedy. But we can only wish that okay, our condolences we can offer, and we are with you at this very unfortunate event of in your life, and we wish our condolences from on behalf of Jus 24/7, and we'll be soon next evening again at the same time 8 p.m. again with you. Keep watching us on Jus 24/7. Thank you so much. Thank you so much. Thanks for having me here, man. Thanks.